ஆன்மீகம் ஆனந்தம் சேனலுக்கு உங்களை அன்போடு வரவேற்கிறேன். வால்மீகி மகரிஷி அருளிய ராமாயணத்தில் சுந்தரகாண்டத்தின் 3வது சர்க்கத்தை இந்த பதிவில் நாம் பார்க்கலாம். சுந்தரகாண்டத்தை படித்தாலோ கேட்டாலோ சொன்னாலோ அளப்பரிய பலன்களை பெற முடியும். ஓம் ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. அத சுந்தரகாண்டஹ அத த்ருதீய சர்க்கஹ. सलम्बशिखरे लम्बे लम्बतो यदसन्निभे सत्त्वमास्ताय मेधावी हनुमान् मारुतात्मजः. निशिलङ्कां महासत्त्वो विभीषकपिकुञ्जरः रम्यकाननतोयाढ्यां पुरीं रावणपालितां शारदां बुधरप्रत्यैः भवनैरुपशोभितां सागरोपमनिर्घोषां सागरानिलसेवितां सुपुष्टबलसंगुप्तां यतैव विटपावतीं चारुतोरणनिर्यूहां पाण्डरद्वारतोरणां भुजगाचरितां गुप्तां शुभां भोगवतीमिव तां सविद्युद्गणाकीर्णां ज्योतिर्गणनिषेवितां मन्दमारुतसञ्चारां यथा चाप्यमरावतीं शातकुम्भेन महतां प्राकारेणाभिसंवृतां किङ्किणीजालघोषाभिः पताकाभिरलङ्कृताम् आसाद्य सहसा हृष्टः प्राकारमभिपेदिवान् विस्मयाविष्टहृदयः पुरीमालोक्य सर्वतः जाम्बूनदमयैर्द्वारैः वैडूर्यकृतवेदिकैः वज्रस्फटिकमुक्ताभिः मणिकुट्टिमभूषितैः तप्तहाटकनिर्यूहैः राजतामलपाण्डरैः वैढूर्यतलसोपानैः स्फाटिकान्तरपांसुभिः चारुसञ्जवनोपेतैः कमिवोत्पतितैः शुभैः क्रौञ्चबर्हिणसङ्घुष्टैर्राजहंसनिषेवितैः तूर्याभरणनिर्घोषैः सर्वतः प्रतिनादितां वस्वोकसारा प्रतिमां समीक्ष्य नगरीं ततः कमिवोत्पतितां लङ्कां जघर्ष हनुमान् कपिः तां समीक्ष्य पुरीं लङ्कां राक्षसाधिपते शुभाम् अनुत्तमां वृद्धिमतीं चिन्तयामास वीर्यवान् नेयमन्येन नगरीं शक्या दर्शयितुं बलात् रक्षिता रावणबलैर् उद्यतायुधधारिभिः कुमुदाङ्गदयोर्वापि सुषेणस्य महाकपेः प्रसिद्धेयं भवेद्भूमिः मैन्दद्विविधयोरपि विवस्वतस्तनूजस्य हरेश्च कुशपर्वणः वृक्षस्य केतुमालस्य मम चैव गतिर्भवेत् समीक्ष्य च महाबाहो राघवस्य पराक्रमं लक्ष्मणस्य च विक्रान्तम् अभवत् प्रीतिमान् कपिः तां रत्नवसनोपेतां गोष्ठागारावतंसकां यन्त्रागारस्तनीं वृद्धां प्रमदामिव भूषितां तां नष्टतिमिरां दीपैः भास्वरैश्च महागृहैः नगरीं राक्षसेन्द्रस्य ददर्श स महाकपिः अत सा हरिशार्दूलं प्रविशन्तं महाबलं नगरी स्वेन रूपेण ददर्श पवनात्मजं सातं हरिवरं दृष्ट्वा लङ्का रावणपालिता स्वयमेवोत्थिता तत्र विकृताननदर्शनां पुरस्तात् कपिवर्यस्य वायुसूनोरतिष्ठत मुञ्चमाना महानादम् अब्रवीत् पवनात्मजं कस्त्वं केन च कार्येन
इह प्राप्तो वनालय कथयस्वेह यत्तत्त्वं यावत् प्राणाधरन्ति ते न शक्या खल्वियं लङ्का प्रवेष्टुं वानरत्वया रक्षिता रावणबलैः अभिगुप्ता समन्ततः अततामब्रवीद्वीरो हनुमानग्रतस्थितां कथयिष्यामि ते तत्त्वं यन्मां त्वं परिपृच्छसि का त्वं विरूपनयनां पुरद्वारेव तिष्ठसि किमर्थं चापि मां हृद्वा निर्भत्सयसि दारुणां हनूमद्वचनं श्रुत्वा लङ्का सा कामरूपिणी उवाच वचनं क्रुद्धा परुषं पवनात्मजम् अहं राक्षसराजस्य रावणस्य महात्मनः आज्ञा प्रतीक्षा दुर्धर्षा रक्षामि नगरीमिमां न शक्या मामवज्ञाय प्रवेष्टुं नगरी त्वया अद्य प्राणैः परित्यक्तः स्वप्स्यसे निहतो मया अहं हि नगरी लङ्का स्वयमेव प्लवङ्गमं सर्वतः परिरक्षामि ह्यतत्ते कथितं मया लङ्काया वचनं श्रुत्वा हनूमान् मारुतात्मजः यत्नवान् स हरिश्रेष्ठः स्थितः शैल इवापरः सतां श्रीरूपविकृतां दृष्ट्वा वानरपुङ्गवः आबभाषेत मेधावी सत्त्ववान् प्लवगर्षभः द्रक्ष्यामि नगरीं लङ्कां साट्टप्राकारतोरणाम् इत्यर्थमिह सम्प्राप्तः परं कौतूहलं हि मे वनान्युपवनानीह लङ्कायाख्याननानि च सर्वतो गृहमुख्यानि द्रष्टुमागमनं हि मे तस्य तद्वचनं श्रुत्वा लङ्का सा कामरूपिणी भूय एव पुनर्वाक्यं बभाषे परुषाक्षरम् मामनिर्जित्य दुर्बुद्धे राक्षसेश्वरपालिता न शक्यमद्य ते द्रष्टुं पुरीयं वानराधमं ततः स हरिशार्दूलः तामुवाच निशाचरीं दृष्ट्वा पुरीमिमां भद्रे पुनर्यास्ये यथा गतं ततः कृत्वा महानादं सा वै लङ्का भयावहं तलेन वानरश्रेष्ठं ताडयामास वेगितां ततः स कपिशार्दूलो लङ्कया ताडितो वृषं ननाद सुमहानादं वीर्यवान् पवनात्मजः ततः संवर्तयामास वामहस्तस्य सोऽङ्गुलीः मुष्टिनाभिजघानैनां हनूमान् क्रोधमूर्छितः स्त्री चेति मन्यमानेन नातिक्रोधः स्वयं कृतः सा तु तेन प्रहारेण वेह्वलाङ्गी निशाचरी पपात सहसा भूमौ विकृताननदर्शनां ततस्तु हनुमान् प्राज्ञः तां दृष्ट्वा विनिपातितां कृपां चाकरतेजस्वी मन्यमानस्त्रियं तु तां ततो वै वृषसंविघ्ना लङ्का सा गद्गदाक्षरम् उवाचा गर्वितं वाक्यं हनूमन्तं प्लवङ्गमं प्रसीद सुमहाबाहो त्रायस्व हरिसत्तम समये सौम्य तिष्ठन्ति सत्त्ववन्तो महाबलाः अहं तु नगरी लङ्का स्वयमेव प्लवङ्गम
निर्जिताहं त्वया वीर विक्रमेण महाबल इदं च तथ्यं शृणु वै ब्रुवत्यामि हरीश्वर स्वयंभुवा पुरा दत्तं वरदानं यथा मम यदा त्वां वानरः कश्चिद् विक्रमाद्वशमानयेत् तदा त्वया हि विज्ञेयं रक्षसां भयमागतं स हि मे समयः सौम्य प्राप्तोऽद्य तव दर्शनात् स्वयंभुविहितः सत्यो न तस्यास्ति व्यतिक्रमः सीतानिमित्तं राज्ञस्तु रावणस्य दुरात्मनः रक्षसां चैव सर्वेषां विनाशः समुपस्थितः तत्प्रविश्य हरिश्रेष्ठ पुरीं रावणपालितां विधत्स्व सर्वकार्याणि यानि यानिह वाञ्छसि प्रविश्य शापोपहतां हरीश्वर पुरीं शुभां राक्षसमुख्यपालिताम् दिदृक्षया त्वं जनकात्मजां सतीं विमार्ग सर्वत्र गतो यथा सुखम् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे तृतीयः सर्गः। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम। आञ्जनेयमूर्ति की जय। हरिः ओं। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरिः ओं। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओं. சுந்தரகாண்டத்தின் 3வது சர்க்கத்தில் உள்ள ஸ்லோகங்களை இந்த பதிவில் நாம் தெரிந்து கொண்டோம். இது போன்ற ஸ்லோகங்களுக்கும் ஆன்மீக விஷயங்களுக்கும் மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நல்லதே நடக்கட்டும், நன்மையை பிறக்கட்டும். நன்றி, வணக்கம்.